So actually within 2 days, we are starting with the steel structures, high-rise building sector ETAB modeling. Have you installed the ETABs on your machines? No, sir. No, sir. I think that announcement has been already done on the WhatsApp group. Please do the installation of ETABs because that is necessary now. Okay, sir. Yeah, so that you can practice on that. So training are going to start within I think two days. Okay, So sir. you should be prepared for that. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Mm, okay, we will continue on to the our basic sessions. Actually, see, my basic sessions will be there throughout the tenure, whatever 1 year trade tenure is there in between. So there is no actually exact, we can say, exact structured way because we will be having a training session on softwares, then basics, maybe theory, drawings, designs, codal informations, and so on. So there are a lot of things we are going to study. And in between, we will have some, say, this kind of conceptual sessions also. And apart from that, we will be also giving you some notes, which you should study at home, also from your end. So I think we have last time covered with the think. Design part regarding the footing, I think. Yes. Now we will discuss today on the. Have we discussed the fixed end and roller supports or this kind of detailing? Hello. Fixed supports, pinned supports. Okay. No, sir. Or roller supports. Roller. These are the three kind of supports. There are many more also, but let's discuss on this. Can anybody tell me what is meant by fixed support? Fixed. Or when I say fixed, what comes in your mind? Not move, sir. Not moved. Okay. So Not and move. No movement. can Absolutely. you see this? Let's say. Let's say if this I'm drawing this. Okay. So is it a fixed support? Or let me draw something else. If I draw like this, and it's like this, let's say. Can you say this as a fixed support? No, sir. Why? Actually, generally, we have seen in drawings, sir, this is simply supported or pin supported, sir. That's all, but not practical idea, sir, where we consider fix Yeah, or. this we have seen in the books, Yes, sir. but whatever book says we don't know. Now, practically, how do you understand this? That is the important point. Yes, sir. How do we make sure? See, it may happen that practically. Uh, Hello? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Or tell me, now tell me your observations so that we can go ahead with that. Let's say there is a one bar like this. There is bolt over here. Huh? Single bolt. I'm putting some load on this. What will Yes, sir. happen to this? What will happen to this? Sir, moment occurs at No, tension, don't tension see, on top, sir. Tension on top, no, sir. don't use any technical words. What will happen to this? A common sense, common person. This rotate, try to rotate, sir. Yeah, this will rotate because this will rotate Rotate and in clockwise direction, sir. yes. Rotate in clockwise direction. Yeah, rotate. So how will you see the deflected shape or its movement? Maybe like this. Say I can write
Should it be like this? Yes, sir. Freely, even though it will come down also. Yes, sir. If I draw like this, it may even come down like this also. Yes, sir. After the load application, it will go down. Let's say it is ice cream stick with a hole, Yes, and I sir. have put one rod into that. It will directly go down. Yes, Yes, sir. it will move like this. Yes, sir. That means it is free to rotate. But this point is not going down. Huh? Yes, sir. Even though you pull like this, it will not go translate like this, and it is not going down, right? Yes, sir. That means it is not allowing to move linearly in this direction or in this direction, but it is allowing to rotate in this direction. So this is the called as the pinned support. Pinned. Yes, sir. This is pinned support. Now visually you can see this, what is pinned. Yes, Now sir. for pinned, even though you draw like this and you say pinned, doesn't matter, as long as it is behaving like this, right? Yes, So sir. its behavior is important, and not the word, not the sketch, not the image. In reality, what will happen? That is the important point. Now let's move ahead a little bit. Now there are see there is a one triangle, let's say steel plate with a hole, and it is a say steel rod or beam with a hole like this. What will happen to this? Can you draw the deflected shape? Or can you visualize the deflected shape? Now let's see what will happen to this. This will have like this. Right. Now just have more observation. What was happening here? Previously, this was like this bottom line was horizontal, right? And after this load application, it became vertical, isn't it? Yes, sir. So it has rotated by 90° in this case now. Here, the previously it was horizontal line like this, and after the load application, there is a load, let's say here. So there is a load, this was horizontal, and there is a some rotation after the load application, right? Yes, sir. So will this go down? See the deflected shape. This portion is remaining at, it is not going down, and it is not even moving outward also. That means this movement is not allowed, but this rotation is allowed. That means whenever there is allowing of the rotation in that support, but no translational movement in vertical or horizontal direction, but rotation is allowed, that is the pinned support, right? Did you get what is meant by pinned support? Yes, sir. So look at the visually, I am trying to understand this. Now let's go ahead here. Let's take one example of, let's see, okay. So there is some, no. Sir, I have a one query, sir. Yeah. Sir, where in RCC structure slab we consider support is fixed pin or units in RCC slab, sir? Yes. We will go after this. Yeah. Okay.
Now tell me, if there is a load here, and see, let's say this is a very concrete block and this is one member. I am just embedding into the concrete block, right? Let's say full concrete block is there and full, and I have embedded that beam fully, right? This rod is there, beam rod, fully embedded into this, anchored fully. Just a moment. So when I apply the load, what will happen to this? This will bend like this, right? Yes, sir. Then see this deflected shape. Just look at this carefully. Now within this zone, as it is anchored fully into this concrete or some support, when I apply the load, this is not rotated, right? Here you could see this could rotate, but this could not rotate here. This also could not rotate. It is embedded into that support, very fixed. Right? That means when this is the case, we can call it as fixed support, because it is not even allowing to rotate near the support. Near the support, I am telling. After that, it is now bending. That is not an issue. But near the support, it is fixed. How do you understand? Because the horizontal line is remaining same even after the load application. So this was the 90-degree angle which is maintained. Here what was happening? This was horizontal and this is inclined now. So it has rotated, right, near the support. So did you get what is meant by fixed support? Yes, sir. Yeah. And not even allowing going down or horizontally. Restriction in moment, sir, is called fixed support, sir. So yes, restricting, resisting, restraining, whatever words you use, restraining to the moments, to the rotation is the fixed support, near the support. Try to understand. Here it is bending. Here you can Yes, see sir. there is some angle. We Yes, are sir. talking fixed support. Yeah. So I hope you understand fixed support. Let's try to understand the concept first. Then we can have some practical examples also. Now let me just tell me. Let's say it is a vehicle resting on this wheels. If this is the load on this vehicle, is it vertically stable? Is it vertically stable? Yes, sir. Okay, so that means when there is a load, this wheel will offer some reaction and it will not move. Will it go down? No, sir. Yeah. Now let's discuss one point. There is we can say there is a soft soil, or let's say there is a water. There is a water, say here. And if I am putting one, let's say, block on the water, on water, I am putting some block, heavy block. Is it stable? Yes. No, sir. Yeah, we can say no, because it will sink, isn't it? It will sink. Yes, sir. Yes, It sir. will sink down. So it is not stable, we can say. So vertically it is not stable. Now here it is stable because it will not sink, because this there is a support over here, and vertically it is okay. Now tell me, for vertical reaction it is not heavy. It is a stable, we can say. But horizontally, if I apply a load horizontally, what will happen to that?
If I apply the load like this, what will happen? The start movement, sir. It will start moving. That means Yes. this is not stable. Now for equilibrium condition, statical equilibrium conditions, we know that our sigma fx should be 0. Now what is meant by that? That is important. Sigma fy is equal to 0 and sigma m is equal to 0. This means there should be equal and opposite reaction in this direction, right? Now Yes, let's say when I apply load like this, it will move. Once it moves, we say that statically it is not equilibrium or statically it is not stable. Now tell Yes, sir. me, if there is a, let's say I put some heavy wall over here, heavy wall or something weight like this. Let's say I offer some. Okay. Now I am trying to move this. Will it move? No, sir. That No, means sir. this support, what No, I have drawn in red color, will offer reaction, opposite reaction in this direction, so that it will not allow to move. That means this equation is satisfied in this case. Similarly, for vertical loads, these wheels are resting on the, say, hard strata or say any hard surface, and they are offering these reactions. Let's say this is my 10, so this will have 5, 5, they will share together, and it will have the resistance. That means sigma Fy will is satisfied over here, right? Okay, sir. Now, let's say if I offer one moment over here, okay, is it stable? no, sir. What will happen? How do I understand that it is not stable? It moves, sir, due to roller support. This will try to go up, this wheel, Go up. isn't it? Yes. This will try to go down, but this will try to lift up. And Lift as up. it is lifting, that means it is not stable, right? That means I need to make some arrangement so that it will be stable. Let's say, अभी इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, अभी यहाँ मैं क्या करूँगा, ऐसे कुछ तो मैं एंकर करता हूँ उसको, right? Okay. Now will it Yes, sir. take this moment? ये लेगा ना moment? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes, So sir. here then it is satisfied in this case. That means whenever we have the this is a simply supported beam which satisfies all these equations, right? And it is stable. So for stability, we should have at least 3 reactions. Yes or no? Minimum Yes, 3 sir. reactions. Yes, sir. And minimum 3 equations are available, right? So these are the 3 equations. 3 reactions are like this, and like this. So this will not allow to, so there is a moment possible also, resistance to the moment, right? So this is called as this supporting conditions, pinned, roller, and fixed one. Okay, now let's go to the practical problems. Now just tell me, now let's say I am having, do you know I section beams or something? Once, yeah. Do you know the I sections, ISMB supports? Yes. Have you seen any steel connection previously? Steel? Yes. Steel truss. Yeah, Warehouse. trusses, yeah, warehouses or something. This kind of, have you seen this ISMB like this? Let's say this is ISMB. I will draw a plan like this. This is ISMB. Okay. I don't want to draw the double line in this case. Let's say this is the plan, right?
Okay. And this is a beam, which is also ISMB, let's say. Look at the sketch very carefully. I already told you. You learn through the observations more. That is the classical approach of structural engineering. Okay. Now, you know this is a web. What is this called as? What we call these two lines, what we call it as? Flange. This is the Flange. what? Yeah, and this we call it as a web. Do you know these words? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say like this. This is your flange. This is your web of the beam. Now tell me, is it a fixed or pinned or roller, whatever you want? Fixed, sir. Fixed. Okay. Now tell me why. Why do you think so? Because, sir, at support end, they do not allow moment, sir. Yeah. So how do you understand this? Due to connection, sir. Now just imagine this. If you apply a load like this, okay, will it really happen like that? What is our fixed? Whenever you say fixed, what you say that this horizontal angle and this horizontal angle should be maintained 90, right? After the load application. Here we have seen this. Yes or no? So what is happening here? Once you load apply, what will happen? This will try to go out. Yes or no? Yes, sir. This will go like this. That means there is a possibility of tension here. Yes or no? Just you can imagine like this. Visually you can see also. Na? This will try to go out. That means there is a tension happening here. And this will try to go inside. So there is a compression happening here. Yes? Imagine हो रहा है ऐसे ही होगा. Is that so? Pardon, please, sir. Pardon, please, sir. See, once you apply the load, this line, red line top flange will try to come out. Yes or no? See, it is trying to bend. So that means these lines are trying to go like this, na? Yes, sir. So here near the support, it is trying to come out. Yes, sir. See, you can imagine that, create some model or something and then apply the load. This top line will try to come out. Yes or no? In that part, the tension, sir. Here, there will be tension like this here, isn't it? It will, Yes. as that line is coming out, trying to come out. Yes, sir. So there is a possibility of tension. So when I say it is a tension, that means when it is coming out, this portion is trying to hold it. The support is Sir, holding. when curvature upward becomes, sir, then tension. No, this curvature, you are seeing here only. I don't know whatever you are thinking. Can you see this here itself? If you can see here itself, that is fine. Curvature, what curvature you are talking? Is it on this figure? If it is so, then you can talk on that. Yes, This sir, on line that will figure. try to come out, and this line, red line, which is in the support, it is trying to hold it back. Yes or no? It is holding back. Who is holding here? Horizontal, sir. Yeah, so it is not allowing to come out of this because this supporting this line is holding back. That means this tension is developed over here. If there is nobody here inside, then this will not be possible. Yes or no? Will it be possible to develop? It will try to rotate. Then it will have like this support. It will rotate. अगर कोई उसको ये रोटेशन मतलब क्या? मोमेंट मतलब क्या? फिक्स मतलब क्या? Moment of resistance. There is a resistance to the moment that is fixed. Moment of resistance we can say. So it is not allowing it to rotate. That means there is a resistance to the rotation, right? And how that resistance to the rotation is achieved? By tension and compression. When there is a tension and compression, that means this tension and this compression is
You know, moment means tension, compression, and depth. So this is available over here. That means it is not allowing to rotate over. So who is resisting this tension, compression, interaction? It is resisting here, right? Yes or no? That means to have the fixed support, there has to be moment of resistance near the in the support. And how that moment of resistance is, how do you assure that it is really resisting the moment? If you say that there is a compression, tension and compression couple happening, then there is a resistance. Now just go here inside this. Now tell me, if there is a load, definitely this will also try to come out. Yes or no? Will it come? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये बाहर जा रहा है. Is there anybody who is holding it back? Is there anybody holding back? No, no. See this gap. Yes, only joint is there, sir. Welding is there. Yeah. Yeah, that means this tension is not developed into the support effectively. यहाँ कैसे मैंने ये I have shown this line inside the support. So there is nobody holding like this. That means after the load application, this will bend like this. That means near the support, it is not, it is rotating actually. That means when it is rotating, you can call it as a pinned support. Yes or no? So this is Yes. not a fixed support. You can experiment this kind of things. Now let's say, then what I need to do? Make it fixed. Yes, sir. There has to be some member which will transfer this tension into the support. To do that, I can think of Plates. ये And Sir, by providing fish plate. तो ये प्लेट में ऐसे पहले डाल दूंगा, ये कनेक्ट करूंगा इसको. I will connect this flange to this, and not only that, I will have some one plate in the column also like this. I will have the column like this, as face plate like this, right? Now this tension is developed into this, yes, and this compression also, right? sir, Now there this will is be what, hole. yeah. Yes, There will be hole in the column, sir. hole? We will No. provide a plate in the column, sir. In the column. Let's say I will show you how will you provide. Basically, usually like a plate, L type of plate is used, I think so, right? No, this plate is also, see here I will provide plate like this on both the sides. This is my plate. This is a plan, huh? Yes, Plan sir. of column. So this way we can provide. So this is, we can stiffener plate. This we call it as a stiffener plates. Plates. So if I can transfer this tension, which is possibly developed, into the support, then I can create a fixed support. Yes or no? So let me draw here is a fixed and here pinned. Pinned, how I assure that it is a pinned? Because I'm not transferring this tension compression. So I'm not, let's say this is a pinned actually. Only there is a shear. This is not allowing to go down. So there is only vertical resistance. So this is not allowing vertically to move. So it will have only reaction like this. And even it is not allowing to move like this. So this is a pinned. As this tension is not transferred over here, tension and compression. But here it is now, I connected this with the plates. So this is fixed support. And this is my pinned support. Yes or no, practically, how can we think? So what is the thought process behind the fixed? Try to understand. I have used some common sense language like this. I have shown you how it is behaving. And I have shown you one steel structure example also. Now there is a question of RCC beam. So now, yes, I think who was asking to me? Amit Singh or Rohit? Yes, sir. Amit, sir. Yeah. Now let's go to the RCC.
So this is a main beam, this is main beam, this beam is supported on the beams. Okay. Now, and let's say there is a steel inside that. Or let's take column example for simplicity. Yeah. Now let's say we are putting some loads over here. These are columns, beam resting on the column. And there is steel inside it. Let's say my steel is ऐसे कुछ तो steel है मेरा. Okay. Now tell me, this is my steel reinforcement provided at the bottom and top. There is stirrups also. I will not show that, but there is stirrups. Now tell me, after the load application, what will happen? And will it behave simply supported, means pinned support, fixed support, or else roller or whatever you want? Tell me. Simply supported, sir. Why? So because sir tension, sir, आप जब आप लोड डाल दें वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा. Yes. तो tension This will sir try to अंदर go outside. Yes, that means there is a possibility of tension. Possibility बोल रहे हैं, हो नहीं रहा कुछ. But यहाँ support में कुछ नहीं जा रहा ना. There is nobody to hold it back. Yes or no? Yes, sir. As it is not holding back, that means it is a simply supported. यहाँ भी और यहाँ भी. Now tell me, if I want to make it fixed, what will you do? Sir, inserted reinforcement into the columns. Columns. Yes. That means I need to develop this bar inside the column sufficiently. ये भी थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा. Compression भी अंदर transfer करना पड़ेगा. I need to transfer the compression as well as the tension. And this we call it as a development length. When I develop this, so this development length is nothing but tension development length. Then this support I can say as a fixed support at both the ends, because there is a LD at both the ends. I can represent mathematically this diagram as, if I draw only beam, and I can say this is a fixed beam. Yes or no? And as there is a tension, that means there is a bending moment at the top near the support. If I draw the bending moment diagram, this will be like this. Yes or no? As it is a bending moment, when you say bending moment, there has to be T, there has to be C, and there has to be some distance, D. So this is the M. M means T into D or C into D. Yes or no? Yes, sir. Now, if I try to, we can say, draw the deflected shape in this zone, this horizontal line will remain same, this vertical line will remain same, and after that you will try to bend. So ये मेरा deflected shape रहेगा, जो मैंने पहले दिखाया था. ये horizontally रहेगा ऐसे, ये भी horizontal line ऐसे ही रहेगी, and then it will try to bend. That means this 90 degree got maintained, this 90 degree got maintained, and I can call it as a fixed one. Right? Sir, मेरा एक query है sir. Yes. Sir, actually in flexural members, sir, tension occurs in bottom section, sir. हाँ, लेकिन this is not. But yeah, speak, please. If we can study in finite element method, then it is in a part that some tension also occurs in upper part. See here, sir, जब यहाँ भी moment है ही ना, तो यहाँ भी tension आ रहा है ना मेरा. Here yes, is also tension. Yes, compression. Yeah, so this is the so, moment. Sir, bottom reinforcement हम LD क्यों नहीं देंगे sir? Top की तरफ sir, slab की तरफ. Yes sir, ये side को. हाँ, इस side को bottom वाले को. यहाँ उसका the tension he see this within this zone there is a tension in this bar. Yes sir. Okay, और बाद में यहाँ compression आ रहा है ना, ये इसको see within this, let's say this is my zone. Within this zone there is a tension in the bar. Within this zone, yes, ये ऐसे. Yes sir. ये tension आ रहा है समझो ऐसे. और इसके बाद में this is trying to push out inside the support. ये ऐसे दबा रहा है.
क्योंकि रोटेट हो रहा है ना, इट इज ट्राइंग टू रोटेट, आर यू गेटिंग? Yes, sir. रोटेशन Yes, sir. देयर इज अ टेंशन लाइक दिस टिल हियर, यहां तक मेरा Yes. टेंशन है, बाद में ये Yes, sir. मेरा कंप्रेस कर रहा है, मतलब ये पुश कर रहा है अंदर। Yes, sir. ट्राई टू इमेजिन दिस इज Yes, एक sir. ही Yes, sir. बार Yes, में sir. दो बिहेवियर आ रहे हैं, वन इज टेंशन वन इज कॉम्प्रेशन। लुक एट दिस, यहां Yes, से sir. आगे टॉप को टेंशन है, बॉटम को कॉम्प्रेशन है, और यहां से आगे टॉप को कॉम्प्रेशन है, बॉटम को टेंशन है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Look at this. Now, to understand these kinds of concepts, I generally recommend you, जैसे like the children's play with the toys. Toys के साथ खेलते हैं उनको, they like to play with the toys. As a structural engineer, I would suggest all of you to play with models, physical models. Physical models. Prepare your physical models of beams, या supports, या कुछ भी करो, so that you can see the behavior visually. Put the load, ये हाथ से आप लोड भी अप्लाई कर सकते हैं, right? Sir, every continuous or beam or intermediate beam is in a sir fixed support, sir. Continuous beam you are talking? Intermediate beam, sir. That is continue, मतलब left right. Sir. हाँ, वो fixed है यहाँ. Let me draw this. Okay, let me draw this immediately. Now let's say, yeah. अभी मैं काम करता हूँ. ये मेरा बीम है समझो. लेट मी ड्रॉ, थोड़ा छोटा ही निकलता. ये पिंड निकलता हूँ मैं. लेट द एंड्स आर आल्सो पिंड, और बीच में भी सपोर्ट से पिंड ही है. लेट्स से दीज आर पिंड. Yes, sir. All pinned supports. Okay, and there is a vertical load. I say सब load से मेरे. Now if you draw the deflected shape, so you can understand the behavior by looking at the deflected shape, not by discussing on the technical terms, not by discussing on the bending moments, not by discussing the mathematics, not by discussing anything. You can understand the behavior only by looking at the deflected shape as a common person, right? So whenever you want to understand the behavior of any structure, try to see the deflected shape. Try to feel it, try to sense it, try to touch it. Now tell me what will be the deflected shape. अभी आपको पता है ये रोलर है, मतलब सॉरी ये पिंड है, यहाँ पिंड है. This will try to, ये तो यहाँ रोटेट होने वाला है. Yes or no? Yes. ऐसे Yes, एंगल sir. आएगा, इसको एंगल आने वाला है इसको. Yes, sir. ये Yes, ऐसे sir. आएगा. अभी यहाँ क्या होने वाला है? टेल मी, यहाँ क्या होगा? Sir, यहाँ पे अपवर्ड जाएगा सर. यहाँ अपवर्ड जाएगा सर. ये जोन है ना, ये जोन में हॉरिजॉन्टली रहेगा, और बाद में ये ऐसे हो जाएगा. Yes, बाद में ये जोन में ऐसे जाएगा, ये ऐसे. yes, sir. ये बाद में ये ऐसे. Yes. अभी मैं थोड़ा सा, और ये ऐसे रोटेट, यहाँ तो रोटेट होने के लिए. नाउ लेट मी ड्रॉ द बॉटम. व्हेनेवर यू शो एनी डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ अ बीम, ड्रॉ बोथ द लाइंस, नॉट सिंगल लाइन. सिंगल लाइन से कभी कभी मिसगाइड हो जाता है. ये ऐसे ऐसे. ओके, सो देयर इज एंगल लाइक दिस, सो इट इज पिंड. रोटेट हो रहा है ना यहाँ. अभी यहाँ है ना, ये रोटेट, ये ऐसे होगा, थोड़ा लाइन रहेगा यहाँ. Now you can see this, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल रहेगा यहाँ. यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, और बाद में ऐसे रोटेट होने वाला है. राइट? Yes, sir. Looking at this even deflected shape, you can understand there is a tension over here, there is compression over here. Yes, as it is Yes, sir. rotating, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ compression tension नहीं रहेगा ये flange में. Right? It will just Yes. have the point. यहाँ मेरा tension रहेगा. Look at the deflected shape. यहाँ मेरा again tension, compression. यहाँ tension. Right? यहाँ कुछ नहीं, 0 0. Yes. Rotate हो रहे. Now when I draw the bending moment diagram of this continuous beam mathematically, because bending moment diagram is nothing but a mathematical diagram of the forces. So I can draw this like this. ये मेरा पिंड है. ये मैं ऐसे representation generally books में ऐसे रहता है पिंड का. And whenever I draw the bending moment diagram, this will have like this. Right?
Yes, sir. It is a 0 over here, 0 over here. And there is some, as you can see, there is a moment over here, moment over here. That means there is a tension at the top, compression at the bottom, tension at the bottom, compression, tension, compression. So मैंने पहले deflected shape से sense किया उसको. Yes or no? Yes, sir. I could sense it through the deflected shape. Yes, sir. And not through the bending moment diagram. Bending moment diagram comes after the deflected shape. This I can see. या मेरे eyes picture में आ रहे. I told you, your eyes, your ear, your touch, your listening, they come first. So you should start your understanding through this point first. Then you can indirectly calculate this. So indirectly means you can use your maths, physics. वो जो knowledge है ना आपका maths, physics का, वो यहाँ use करने के बाद में. But here you can, if you want to believe on something, you can believe here itself in this zone. You cannot say कि मैंने ये diagram निकाला. अभी क्या होगा? Directly मैंने ऐसे कुछ तो diagram दिया. I tell you, say many times whenever students are given some problems, draw the bending moment diagram. Okay. Whenever say we say एक problem आता है examiner का, he says ऐसे कुछ तो है मेरा, is draw ऐसे और ये ऐसे point से. He is saying draw the bending moment diagram. Now when I see look at this, I don't know this representation. It may mislead to me also. Some students may draw like this. अबे ऐसे हो सकता है ना? Some students may draw like this. Some students may draw थोड़ा ऐसे भी निकल सकती है ऐसे. Okay. Abhi, if you don't understand the meaning of these supporting conditions, you can draw anything. ये जब whenever you do draw like this kind of bending moment diagrams, you haven't understand or you haven't understood this because you could not see this. You are just giving some, we can say anything means whatever you want. It has no meaning. But if you see this first and whatever is the reflected shape, then you can draw it. Now I can tell you, I want to ask you one question. So there is one beam. से निकालता हूं मैं एक बीम को. एक बीम निकालता हूं और मुझे बताने का कि उसका डिफ्लेक्टेड शेप देख के कि उसका सपोर्टिंग कंडीशन कैसे है. Let's say I have one support. यहाँ कुछ तो एक मेरा सपोर्ट है. मैं अभी कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इमेज नहीं, कुछ नहीं जो नहीं कि बुक्स में रहते. यहाँ एक सपोर्ट है मेरा, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है और यहाँ एक सपोर्ट है. I am drawing the deflected shape. Okay. You should tell me what is the bending moment diagram for this. थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड शेप हाथ से निकल रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो जाएगा. यहाँ एक सपोर्ट है मेरा, यहाँ एक सपोर्ट है. I don't know which are the supports, fixed है, pit है, पता नहीं मुझे. Look at the deflected shape and tell me what is the bending moment diagram for this. कोई बता सकता है कि मुझे? Yes, sir. First of all, support के बारे में बताना है, bending moment diagram, sir. Okay, support बताओ, कुछ भी बताओ. First one was the fixed support, sir. ये मेरा fixed है. Okay, I'll write as a fix. Okay, here. Sir, here pinned. लेकिन how it is behaving? You can say pinned, but it's not a behavior is, let's say continuous. Call it as continuous. Yes, sir. Continuous. यहाँ क्या है? Fixed. Okay. Continuous means nothing but a fixed only. Yeah?
Yes, sir. because it has a moment resistance. Yes, sir. It can have a moment of resistance. Okay. Now tell me the BMD, bending moment. Now tell सर me, yeah, okay, बताओ. सर ऊपर पे फिक्स सपोर्ट के ऊपर पे टेंशन आएगा सर. Yeah, that is the thought process. Yes, your thought process is correct. Don't drop bending moment. To understand the bending moment, you should know where is the tension and where is the compression. Here you can see there is a tension. Here you can see there is a compression. यहाँ क्या ऐसे हो रहा है, ऐसे कर्वेचर मेरा, right? Yes, sir. यहाँ क्या हो रहा है? अभी वो तो ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने. ठीक है, यहाँ सी. यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है. मतलब ये कॉम्प्रेस हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है? टेंशन निकल रहा है. Similarly over here, that means there is a tension at the top. Whenever we draw the bending moment of any beams, any columns or whatever, we draw the bending moment diagram on the tension face of that beam. Tension face. अभी tension face इसका कहाँ है मेरा? ऊपर. टॉप पे. तो मेरा bending moment मैंने ऊपर draw करूँगा मैं. Okay. That means I will draw the bending moment. अरे ये क्या हो रहा है? Just a moment. ये मेरा ऐसे और ये ऐसे और यहाँ नीचे tension. तो यहाँ मेरा टेंशन नीचे आएगा. सो व्हेनेवर आई ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन है इसलिए मैं यहाँ निकल रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट. यहाँ टेंशन ऊपर इसलिए ऐसे. अगेन हियर टेंशन टॉप को तो मैंने फिर से ऊपर लिया एंड दिस वे वी कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट. सी मुझे कुछ भी पता नहीं था. आई जस्ट सीन द डिफ्लेक्टेड शेप एंड आई कुड अराइव एट दिस डायग्राम. सो माय एम इज start your understanding through this, through eyes. सर एक क्वेरी है सर. Yes. सर जो फर्स्ट फिक्स सपोर्ट है उसमें बॉटम में आपने जो कंप्रेशन का एरो दिखाया सर वो अंदर की तरफ एरो होगा ना सर? इनवर्ड होगा सर? आउटवर्ड आपने दिखाया. ये बॉटम पे सर ये वाला ऐसे ना. हाँ 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 ठीक है. ये एरो सर ये ऐसे रहेगा ना. हाँ. अभी एरो है ना. सी अभी नॉट अ बिग डील. आपको पता है वहां टेंशन है, वहां कॉम्प्रेशन है. यस सर. ना उसको निगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, एरो आउटवर्ड बोलो, इनसाइड बोलो, कुछ भी बोलो, डजंट मैटर. You know there is a tension, there is a compression. Yes, you should be consistent with the arrows and your positive negative. If you say negative is the tension, be consistent throughout the system कि negative है तो टेंशन नहीं आना चाहिए. If you say ये एरो मुझे टेंशन बता रहा है तो ये एरो ऐसे टेंशन नहीं होना चाहिए. So generally टेंशन में ऐसे दिखाते हैं. So there are different. मैं ऐसे दिखाता हूँ. टेंशन रहेगा तो मैं ऐसे आगे दिखाता हूँ, मैं तो पुल कर रहा है उसको. और ये कॉम्प्रेशन रहेगा तो मैं ऐसे इस इनवर्ट कॉम्प्रेसिंग इनवर्ट. ये मेरा स्टाइल है अभी. तो यहाँ वैसे कर सकते हो. अभी एक्चुअली टेंशन निकालना होगा तो दो एरोस निकालने चाहिए तो ये आपको पता चलेगा. लेट मी ड्रॉ हियर. ये ऐसे निकालना चाहिए एरो, ये ऐसे और ये ऐसे. दैट मींस इट शोज दैट दे आर पुलिंग. यस सर. इफ आई शो द कॉम्प्रेशन हियर देन दे आर पुशिंग. ऐसे दोनों को ऐसे ऐसे है वो. गेटिंग? यस सर. यस सर. गेटिंग सर. Alright, so this is your. Okay, now tell me. अभी आपने बीम लिया लेकिन कॉलम में भी बेंडिंग मोमेंट आता है. डू यू नो दिस? यस सर. नाउ टेल मी. अभी एक फ्रेम निकालते हैं सिंपल सा. अभी ये बता रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा है बहुत सारे कॉलेज में कंसेप्ट्स क्या है, पिंड क्या है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है. प्रैक्टिस में साइट को या स्ट्रक्चर को ये पता नहीं चलता कि आप ऑफिस में उसको मुझे क्या बोल रहे हैं. मतलब लेट्स से दिस बीम इज देयर ऑन साइट. He doesn't understand what you say. He doesn't understand what you are doing in the office because structure तो natural एक object है. उसका material characteristic उसमें क्या क्या डाला हुआ है उसके हिसाब से behave करेगा ना, या आप बोलेंगे ऐसे behave करेगा. Will the structure understand your language? ये तो बाहर है साइड पे. ये तो आप बताएंगे. मतलब वो बोलेगा कि अंदर मेरी जो रेजिस्टेंस अवेलेबल है वैसे मैं बिहेव करूंगा. इफ देयर इज समबडी हु इज रेजिस्टिंग मी then it is okay. If there is no resistance to the rotation तो मैं rotate हो जाऊंगा. If there is a resistance to the rotation, लेकिन how I understand it is a natural. Now ऐसे समझो कि ये okay, ये भी ऐसे अंदर डालता हूँ मैं उसको. ऐसे में कंक्रीट का ऐसे ब्लॉक है बड़ा सा, उसको अंदर मैं एम्बेड कर रहा हूँ उसको. ओके, लेट्स से दिस इज एम्बेडमेंट. मेरा सपोर्टिंग पॉइंट तो यही है.
दिस इज माय सपोर्टिंग पॉइंट, ये वाला, दिस इज माय सपोर्टिंग. ओके, नाउ देयर इज अ लोड, अपवर्ड लोड, इसे डाउन, सॉरी डाउनवर्ड लोड. इस अभी क्या होगा इसका? इफ इट इज अ कंक्रीट, beam and column, let me draw this. If this is a, and उसमें स्टील है मेरा ऐसे, चलो, definitely there will be some steel into the column, ऐसे कुछ तो रहेगा मेरा ऐसे. Let's say this is my 10, अभी ऐसे है, ऐसे. अभी लोड एप्लीकेशन होने के बाद क्या होगा बताओ? डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा इसका? सर कॉलम का या बीम का सर? सभी, अभी सभी का देखना है हमें. ओके सर. सर बीम सेक्शन सर जस्ट बिहेविंग लाइक ए सिंपली सपोर्टेड पिन सपोर्ट सर. हाँ, मतलब शो मी द डिफ्लेक्टेड शेप. अब ये पिन सपोर्ट तो इससे इमेजिनरी वर्ड एंड सेंटेंस ना, यहाँ क्या होने वाला है? इफ यू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा, कैसे दिखेगा इसे? ये सर बॉटम पे सर टेंशन आएगा सर, बोथ एंड पे. हाँ नहीं, वो टेंशन भी बहुत बात है. डिफ्लेक्टेड शेप कैसे रहेगा? सी दिस बार इज नॉट गोइंग, इसका मतलब ये मेरे दो सोचे, देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग हियर. इट में हैपन, ये कॉन्क्रीट है सिर्फ यहाँ. यस सर. सो दिस विल ट्राई टू रोटेट, और यहाँ टेंशन आएगा तो ये कुछ ये नहीं होगा. दिस बार विल कम आउट, दैट मीन्स ऐसे कुछ तो होगा मेरा. ये ना ऐसे क्रश हो जाएगा यहाँ कॉन्क्रीट इस जोन में, नहीं क्या? कोई नहीं ना, यू नो दैट इफ दिस देयर इज अ टेंशन पॉसिबिलिटी हो रही है, दिस विल ट्राई टू क्रश. और ये ऐसे, एक तो ये तो स्लाइड ऑफ हो जाएगा दोनों. दिस बीम विल गो डाउन. अगर यहाँ कुछ नहीं रहेगा ज्यादा तो विल इट शेयर ऑफ हियर? यस सर. एक पॉसिबिलिटी है कि टोटल बीम ऐसे स्लाइड हो जाएगा नीचे. लेट्स से ऐसे नीचे आएगा, स्लाइड होके ऐसे स्लाइड होके नीचे आएगा, राइट? देयर इज वन पॉसिबिलिटी. सो व्हाई इट इज स्लाइडिंग? लेट्स से देयर इज, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, ये कंक्रीट से यहाँ क्रश हो रहा है, यहाँ से स्लाइड हो रहा है ऐसे, जैसे कुछ तो एक पीस है, समझे, चीज का पीस है, समझे. लेट्स से दिस इज अ बीम ऑफ चीज. पहले 2 मिनट इमेजिन करेंगे तो ऐसे स्लाइड हो जाएगा बीम, राइट? तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हम सोच रहे हैं पॉसिबिलिटी. देयर इज वन मोर वे दैट, ठीक है, ऐसे बोल देंगे कि कंक्रीट है उधर सफिशिएंट, वो स्लाइड होगा नहीं. दिस पोर्शन ऑफ द कंक्रीट इज नॉट अलाउइंग टू स्लाइड इट डाउन. ओके, देन व्हाट विल हैपन? नाउ टेल मी. अब ऐसे बोलेंगे कि ये जोन का कंक्रीट सफिशिएंटली लोड ले रहा है तो स्लाइड नहीं होगा. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ. शेयर ऑफ तो नहीं हो रहा. ओके, देन नेक्स्ट. नाउ दिस विल ट्राई टू कम आउट, दिस विल ट्राई टू गो इनसाइड. मतलब ये टेंशन डेवलप होने के समय, दिस इज नॉट डेवलप्ड हियर. दैट मीन्स ये मेरा बीम ये यहां से ही सपोर्ट की डायरेक्शन से ही ऐसे बेंड हो जाएगा. सी लुक एट दिस. दैट मीन्स यहां मेरा एंगल डेवलप हो रहा है, यहां से मेरा रोटेट हो रहा है जगह से, सपोर्ट से, राइट? यहां से भी मेरा ये ऐसे प्योरली ऐसे. सो यहां सिंपली भी हो रहा है, और कॉलम में कुछ भी रोटेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि कॉलम में समझ में आ रहा है ना. तो यहां देयर इज अ एंगल विद दिस. यस सर. लुक एट दिस, ये पॉइंट सपोर्टिंग पॉइंट से मैं दिखा रहा हूं. व्हेनेवर आई शो, अभी ऊपर कैसे दिखाया था मैंने, यहां से आगे, यहां से यहां तक ये लाइन हॉरिजॉन्टल था, और फिर यहाँ 90 मेंटेन हो रहा था, इसके बाद रोटेट हो रहा था. अभी यहां मैं कैसे दिखा रहा हूं हमारे केस में, बीम में थीटा एंगल के साथ रोटेट कर रहा है. हाँ, यहाँ ये पॉइंट से मेरा रोटेट हो रहा है, डायरेक्टली सपोर्ट से ही रोटेट हो रहा है, इसलिए मेरा पिंड है. यस सर. राइट? कॉलम को कुछ भी नहीं हो रहा, वो जैसे वैसे खड़ा रह रहा है, बिकॉज ये यहाँ जगह पे ही घूम रहा है ना, सपोर्ट पे. सो इट इज नॉट अलाउइंग द रोटेशन टू द कॉलम. कॉलम में कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, रोटेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि बीम में ही रोटेशन का कैपेसिटी नहीं है, तो वो दूसरे को क्या देगा, isn't it? Yes. Now let's try to think in the other way. वो क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज द बार इज नॉट एम्बेडेड इनटू द कॉलम. लेट्स गो ओवर हियर. नाउ लेट्स एम्बेड दिस. ऐसे कुछ तो एम्बेड करेंगे ऐसे.
और ये इसको भी अंदर डाल देंगे। ये कंसेप्ट को मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, बिकॉज अगर आज नहीं पता रहेगा तो 10 साल में भी देर आर मेनी पीपल ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, दे इवन टिल आफ्टर 10 years ऑल्सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या है फिक्स है क्या पिन है। कुछ तो एज्यूम करते हैं मॉडल में, कुछ तो डिजाइन करते, कुछ तो ड्राइंग देते, चलता है। कंक्रीट और स्टील डालने के बाद स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ तो एजम्पशन रहते वेग। चलते क्या होता है स्ट्रक्चर को, कुछ नहीं गिरेगा। दिस काइंड ऑफ वेग थिंकिंग इज देयर मेनी टाइम्स बाय द इंजीनियर्स, एंड वी डोंट वांट टू बिकम लाइक दैट। ओके, नाउ अभी मैंने एम्बेड किया, दैट मीन्स दिस टेंशन इज पॉसिबल। Whenever I say there is a tension and compression possible into any beam, there has to be a moment. अभी ये टेंशन कोई तो खींच रहा है, तो यहाँ के ये खींच रहा है कि नहीं नीचे? यस सर। ये टेंशन ऐसे खींच रहा है और ये दोनों लैप रहेंगे मेरे कॉलम के, कॉलम Yes, बार sir. एंड दिस एल विल लैप। सो ये टेंशन मेरा यहाँ भी खींच जाएगा, इस बार में भी यस यहाँ सर। भी मेरा जाएगा टेंशन। सिमिलरली यहाँ मेरा कॉम्प्रेशन जाने वाला है, ये अंदर जा रहा है ना। यस सर। नाउ व्हेन आई शो द डिफ्लेक्टेड शेप, अभी ये कौन सा डार्क कलर, ओके, अभी ये मेरा, इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल ऐसे मेंटेन रहेगा, राइट। ये भी वर्टिकल मेंटेन, ये हॉरिजॉन्टल मेंटेन हो रहा है मेरा, ये मेरा मेंटेन हो रहा है, ये 90 डिग्री मेंटेन हो रहा है मेरा, यहाँ भी वैसे हो रहा है मेरा। और बाद में आई नो दैट दिस विल बेंड, उसके बाद में, सॉरी यहाँ से आगे थोड़ा निकल दो। सब कुछ जो हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, इसमें यस सर। कभी मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ देख के चल रही है, कंसेप्ट सिर्फ देख के चल रही है। ओके, ये 90 डिग्री, ओके। अभी यहां से ये एज दिस इज रोटेटिंग हियर, अभी इसके बाद में ये कॉलम ऐसे बाहर जाने के सोच रहे हैं। ओके ना, अभी यहाँ देखो, यहाँ बाहर जाने रहा है, और अभी ये थोड़ा डिफ्लेक्शन डायग्राम निकालना थोड़ा रहता है डिफिकल्ट। एक्चुअली आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो ऐसे कुछ तो होगा। यस सर। थोड़ा सा एग्जैगरेटेड दिखा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे कुछ तो होगा। यस सर। अभी ये मेंटेन होने के बाद, एक्चुअली ये भी है ना, थोड़ा सा मैं फिर से निकलता हूँ इसको, ये ऐसे ऐसे 90 होगा और बाद में ऐसे थोड़े से रोटेट होके, हाँ नाउ दिस लुक्स बेटर। ओके, ये देखो, नाउ लुक एट दिस। अभी यहाँ टेंशन लेने के लिए ये बार है मेरा कॉलम में, यहाँ कंप्रेशन लेने के लिए बार है, दिस मीन यहाँ टेंशन आ रहा है, मेरा कंप्रेशन आ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। कॉलम में अभी ये लुक एट दिस, ये मेरा कॉलम वर्टिकली था ऐसे, और ऐसे अभी इंक्लाइन हो गए। पहले Yes, वर्टिकल sir. था, इसका मतलब ये पिंड है ना। यस सर। ये यस सर। अब ये क्यों घुमा वहां? क्योंकि सर, लुक एट दिस, ये बार ऊपर ही, नीचे अंदर एम्बेड नहीं किया मैंने, क्योंकि क्या है, व्हेनेवर इट ट्राइज टू ऑफर, यहाँ टेंशन आने की संभावना थी। ऐसे घूमते समय ना, यहाँ टेंशन आ रहा था, समझा? जैसे यहाँ टेंशन आने के समय ये जो बार है ना, रेड वाला बार, ये मेरा सपोर्ट में जा ही नहीं रहा ना अंदर। यस सर। इफ इट गोज इनसाइड द सपोर्ट, देन इट विल नॉट रोटेट। फिर मैं एक राइट साइड को निकालता हूँ उसको, जो ये केस निकालता हूँ मैं कि यहाँ वो अंदर जा रहा है बार। सभी लोग हैं ना? यस सर। यस सर। या ऑल अदर पीपल, कहाँ है बाकी लोग? है ना? Listening. या ओके। Yes. आवाज नहीं आ रहा इसलिए समझ में। ओके, Yes, नाउ sir. अभी यहाँ भी देखो, ये अभी ये अंदर बार डाला, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ जो मेरा टेंशन डेवलप होने वाला है ना, यस, जस्ट अ मोमेंट।
Yes. Yes. Now there is a possibility of tension over here, and yes, there is somebody who will hold it. इसका Yes, मतलब sir. इसका मतलब अभी यहाँ मुझे there is a resistance to the rotation that means, और यहाँ भी है बार्स अंदर मेरे एम्बेड हुए, तो यहाँ क्या होगा मेरा, अभी ये ऐसे होने के बाद, ये ऐसे होने के बाद ये 90 डिग्री मेंटेन होगा यहाँ, और बाद में ये ऐसे ऐसे कुछ तो होने वाला है, ये ऐसे ओके, और ये 90 डिग्री मेंटेन हो रहा है. लुक एट दिस. अभी यहाँ देखो, यहाँ मेरा ये फिक्स सपोर्ट है, ये मेरा पिंड सपोर्ट है, पिंड पिंड. वाई इट इज सो, अभी समझ में आया कि ये फिक्सिटी ये मेरे बार एम्बेडमेंट से मिल रहा है यहाँ सपोर्ट में. सो वेन एवर देर इज अ बार एम्बेडमेंट इन टू द सपोर्ट, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फिक्स सपोर्ट. अगर एम्बेडमेंट नहीं होगा तो ये रोटेट हो जाएगा, क्योंकि अंदर ये जो टेंशन था यहाँ अंदर जा ही नहीं रहा ना यहाँ. नाउ Yes, sir. इफ आई ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस डिफ्लेक्टेड शेप, तो निकलता हूं मैं कैसे. So, कभी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे उल्टा नहीं ये करना है. ये मेरा मैथमेटिकल डायग्राम है. अभी जो सिंगल लाइन डायग्राम जनरली मैथमेटिकल रहते हैं, कैलकुलेशन बुक्स. एज इट इज अ पिंड, आई विल शो दिस पिंड एज लाइक दिस. समझ में आया, ये ऐसे पिन निकलते हैं ना. Yes, sir. एंड यस, आई कैन अंडरस्टैंड ये फिक्स हो रहा है क्योंकि 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. दैट मीन्स आई कैन कॉल इट इज अ फिक्स्ड, राइट. और ये लोड देखो, ये टेंशन यहाँ आ रहा है, मेरा कॉम्प्रेशन यहाँ आ रहा है. आई कैन सी दिस वेरी वेल. और यहाँ भी टेंशन है, यहाँ कॉम्प्रेशन है. दैट मीन्स माई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुड बी लाइक दिस. ये फिक्स बीम की तरह हो रहा है ना. अभी यहाँ ये टेंशन आ रहा है, मतलब ये मेरा बाहर टेंशन आने वाला है, और यहाँ जीरो है क्योंकि रोटेट हो रहा है. ये बेंडिंग मोमेंट है Yes, sir. मेरा डायग्राम जीरो में. यहाँ क्या हो रहा है, Yes. यहाँ टेंशन कॉम्प्रेशन आ रहा है, और यहाँ मेरा टेंशन और कॉम्प्रेशन आ रहा है. दैट मीन्स दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस. समझ में आया? Yes, sir. It's very easy. I hope Yes, sir. by understanding these kind of concepts, now you can think this way for any kind of problem and try to explore your understanding through this. So whenever you try to understand these conditions, use this first. See the deflected shapes. Try to understand the deflected shapes and visualize it. If you try to visualize, please make sure that your visualization is correct. Otherwise, you need to do the experimentation. Experimentation means what? Experiment means it is a reality. Whatever you see in reality, that is the reality. But whatever you imagine, it may not be reality. समझ में आ रहा है? Imagination is through the thinking, which may mislead you sometimes, many times. But if you see through the experiments, then definitely जो है सो है. So I think you got this concepts of the supporting conditions. Okay. Yes, sir. Now I will share you some ready reckoners for the bending moments for simply supported fixed supports या frames वगैरह के लिए हम that for your study purpose. Do you know how to draw the bending moment diagrams then? अभी अलग अलग रहेंगे. I will give you some assignments also. So draw the bending moment diagrams of those shapes. I don't want to teach each and everything because you understood the concepts now. Now Yes, it's your turn that you should practice. Do some exercise like this. I will show you. Let me check out मेरे पास क्या क्या है या नहीं.
I will share that files to you. अभी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स और ये है ना, ये रीडायरेक्टनेस है हमारे पास. So what are the bending moment diagrams for different supporting condition and loading conditions? समझ में आ रहा है? Yes, I will share you this PPT to all of you for study. But I would recommend you to जो simply supported या क्या बोलते determinate structures है जो which you can do it by 3 equations, sigma fx, sigma fy. You can don't refer this. You develop your system. So last time मैंने बीम का बताया था ना, बेंडिंग मोमेंट कैसे अराइव किया. There are some other also. ये मैं I will share this to you, all of you, for practice. और ये है ना, ये problems है for you. Let's say this is a अभी मैं थोड़ा sample दिखाता हूँ आपको, then you try this. Let me now ये है ना second equation. ये 2-3 problems हम solve करेंगे quickly. And बाद में जो problems है you have to solve this. Okay? Right? yes sir. Now let's solve these simple problems first. There is a 10 kilonewton per meter load on the beam of 4 meter span. अभी ये देखो, ये मेरा पिंड है और ये रोलर है, right? Now let's draw this. It's very easy. Quickly we will go this. Actually this has been done in school, college, first year or something. अभी मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है और ये मेरा पिंड है. ओके, ये पिंड, ये रोलर. ओके, एंड देयर इज a UDL of 10 kilonewton per meters. ओके, एंड 4 meter span. Now tell me, इसका मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है एंड shear force निकालना है. How will you go ahead? How will you draw the bending moment diagram? How will you draw the shear force? पहले क्या करते to solve this kind of problems? Sir, summation of force is equal to 0 in equilibrium condition, sir. So हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस है सिग्मा fx is equal to 0, सिग्मा fy is equal to 0. Okay. अभी what will happen due to this load? What will happen? अभी ये मैथ्स है, थोड़ा आगे बाद में सोचेंगे. ये ऐसे लोड जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली ये लोड अप्लाई हो रहा है और देयर आर 2 सपोर्ट्स. सो व्हाट विल डू दिस सपोर्ट्स? क्या होगा उस सपोर्ट्स? व्हाट दे आर डूइंग सपोर्ट्स? रोल क्या है सपोर्ट का? उसका सपोर्ट या लोड का सर? सपोर्ट का पर्पस क्या है? क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि दिस ये जो बीम है मेरा, दिस विल नॉट गो डाउन. व्हाई इट इज नॉट गोइंग डाउन? बिकॉज दिस ए एंड बी सपोर्ट्स आर रिएक्टिंग इट. रिएक्शन दे रहे उसको, सो दैट इट विल नॉट गो डाउन. दैट मीन्स दे विल ऑफर वन रिएक्शन. अभी एक रिएक्शन रहेगा, ये पिंड है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी पॉसिबल है ना. यस सर. दिस विल नॉट अलाउ इट टू गो डाउन. अभी यहाँ क्या होगा? ये वर्टिकली रिएक्ट कर रहा है. हॉरिजॉन्टली कर रहा है क्या? क्योंकि रोलर है तो ये नहीं कर रहा है कुछ, राइट? यहाँ नहीं ना, ये तो मूव, दिस मूवमेंट इज अलाउड. इस व्हील है ना, ये रोलर है, व्हील है, तो ये फिर it is offering only this 1, 2 and 3 we can say reactions possible. अभी कैसे निकालना ये रिएक्शन मुझे बताओ. लेट मी कॉल इट एज अ VA. इसको बोलता हूं मैं VB. इसको बोलता हूं मैं HA. सो VA VB कैसे निकालना है हमें? अभी ये तो आसान प्रॉब्लम है. ये 4 मीटर है तो हाफ ऑफ लोड हो जाएगा. 20 हो जाएगा. हाँ, तो 10 into 40. लेकिन इक्वेशन से निकालना है, पहले कॉमन सेंस से निकालते, बाद में इक्वेशन से. सो 10 into 4 इज द 40 kilonewton टोटल लोड ऑन दिस बीम. तो आधा इधर जाएगा, 40 divided by 2, ये 20 आएगा, राइट? और यहाँ भी 20 आएगा. ओके, अभी HA कितना रहेगा? HA 0 रहेगा सर. 0 रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली कुछ भी लोड अप्लाई नहीं किया हुआ बीम को. सो HA विल बी 0 डायरेक्टली, मतलब HA विल बी 0 because there is no load in the horizontal direction. ये हमारा कॉमन सेंस के लॉजिक से गए. Let's try to go by the mathematical calculations. So whenever you think, first think in the common sense. Simple
कैलकुलेशंस। ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सिंपल प्रॉब्लम के लिए कॉम्प्लेक्स सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये इक्वेशन से जाएंगे हम। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन डाला मैंने, तो एच ए समझो ये पॉजिटिव है मेरा। ओके, सो एच ए, अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो एच ए फोर्स ही नहीं है तो 0 आएगा। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 नहीं, पहले हम सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 करेंगे। लेट्स से सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। अभी मोमेंट अबाउट ए निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा? लेट्स से मेरा एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस और क्लॉकवाइज इज प्लस। ओके, ये मोमेंट का इक्वेशन मुझे निकालना है, तो माइनस, अभी v इंटू यहाँ ही निकाल रहा हूँ ना, तो v इंटू 0 है ना डिस्टेंस मेरा, तो v Yes, ये sir. तो नहीं आएगा, माइनस वी बी इंटू 4। अभी 10 लोड तो नीचे जा रहा है ना, नीचे मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट निकल रहा है अबाउट ए, तो प्लस 10 इंटू ये टोटल लोड 4, ये मेरा टोटल लोड हुआ। और कहाँ एक्ट हो रहा है वो? एट द सीजी। सीजी कहाँ है इसका? 2 मीटर पर 4/2 इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट इज 0। तो कितना होगा मेरा? माइनस 4VB प्लस कितना आएगा ये 80 80 सर। दैट मीन्स VB इज इक्वल टू मेरा प्लस 20। यस, यस सर। प्लस मतलब मैं लेट्स से, ठीक है, प्लस मतलब जो मैंने एरो का डायरेक्शन है वो करेक्ट है, एज्यूम किया हुआ। Now sigma Fy is equal to 0 is nothing but VA अपवर्ड पॉजिटिव देख कर रहा हूं मैं, प्लस VB और माइनस ये 10 इंटू 4, यस और नो, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अभी VA पता नहीं है मुझे अभी तक, VB कितना है मेरा? 20 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अभी ये थोड़ा सा लेंदी मेथड से, बट ठीक है, ये मैथमेटिक्स बोलते हैं हमारा, राइट? समझ में आएगा कैसे आया मेरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। सो दैट इज द वे इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये आसान था इसलिए मैंने, इट वाज वेरी इजी, ये 20 है 20। नाउ लेट्स गो टू द सम अदर प्रॉब्लम जिसमें ये कितना है मेरा, ये लेट्स से ये मेरा पिंड है, ये रोलर है, और कितना था प्रॉब्लम में? क्या है ये? हम्म, 1 मीटर पे निकालेंगे, चलो। ये 10 किलोमीटर है, ओके। और अभी बताओ, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है। सो पहले हमने क्या किया था? व्हाट इज आवर फर्स्ट, व्हेन टू ड्रॉ, बिफोर ड्रॉइंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स वी शुड कम फर्स्ट डिराइव विद रिएक्शंस। हमें रिएक्शन पता चाहिए। अभी हाँ, मोमेंट निकालना है हमने, मोमेंट भी निकालेंगे, चलो। अभी इसका पहले मोमेंट निकालेंगे, सभी मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालूंगा? लेट्स से व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए? बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या आएगा मेरा? ये तो 0 है ना? यस सर। VA इंटू 0 इज 0। अभी मोमेंट एट बी क्या है? सॉरी, सी। ये मोमेंट एट सी कैसे निकालेंगे? बी इंटू 4 सर। VA इंटू हाफ है ना ये डिस्टेंस, 2 VA इंटू 2, मैं इक्वेशन यहाँ निकालता हूँ, VA इंटू 2 माइनस, सो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू VA इंटू 2। पहले देखो ऐसे, माइनस क्लॉकवाइज है, यहाँ से ही है ना, 10 इंटू 2 इंटू माइनस 10 इंटू 2 इंटू, सॉरी, -20 इंटू 1 सर। 10 इंटू 2 इंटू 2/2, ओके।
Yes, sir. 10 into 2 into 2 by 2. Yes, sir. -20. ये आएगा ना? Yes, sir. हाँ, ओके. सो ये मेरा मोमेंट आएगा. VA पता है मुझे, VA इज नथिंग बट 20. तो 20 into 2 इज कितना? 40 माइनस ये 20. कितना? 20. तो 20 आएगा. 20 Yes, sir. किलो न्यूटन मीटर. अभी यहाँ 2 into 2 मतलब अगर मैंने इफ आई आस्क यू टू, यहाँ क्या आएगा मेरा मोमेंट? यहाँ x पे. तो x स्क्वायर का इक्वेशन आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने, राइट? VA into x माइनस 10x स्क्वायर बाई 2 आ रहा है ना यहाँ. Yes, sir. x स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ पैराबोला, इसलिए मेरा ये इस पैराबोला की तरह ड्रा हो जाए. दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट? गॉट दिस? Yes, sir. नाउ गो अहेड. अभी इसका निकालो. पहले हमारा एम रहता है टू अराइव एट रिएक्शंस. ये रिएक्शन मेरे VA VB ये आने चाहिए मुझे. तो VA VB के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी वो बाय ऑब्जर्वेशन तो नहीं आएगा जैसे हमने हाफ ऑफ निकाला था. तो डेफिनेटली Yes, आई sir. नीड टू गो विद द मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0. तो ये Yes, sir. निकालना पड़ेगा ना. तो माइनस VB इंटू Yes, sir. कितना? 4 Into 4. प्लस 10 इंटू 1 1. इक्वल 1. टू 0. 0. तो व्हाट इज VB? क्या आएगा वो? 10 by 4 2.5. 2.5. 2.5 किलो न्यूटन आएगा. Yes, sir. तो VB इज इक्वल टू 2.5. Yes, sir. अभी That VA प्लस VB इज इक्वल टू 10. 10. तो 10 माइनस ये मतलब ये 7. 5. ओके. अभी मोमेंट एट ये C पॉइंट बताओ कितना आएगा? मोमेंट एट C, टेल मी. मोमेंट एट C इज इक्वल टू VA इंटू मतलब ये Yes, sir. 7.5 इंटू 1 माइनस तो नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है ना, ऊपर कोई नहीं ना. नहीं, कोई नहीं, सर. तो 7.5 किलो न्यूटन ये पॉइंट लोड पे आएगा. Yes, sir. दैट मीन्स व्हाट विल बी माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ ही निकलता हूँ. यहाँ तो 0 है. Yes, sir. ये ऐसे आएगा कुछ तो लीनियरली आएगा ना ये. Yes, sir. 0.5. I hope all of you are getting this. Yes. Yes, sir. सर मोमेंट एट सी VP का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा सर. दोनों वो दोनों साइड से भी उतना ही आने का है ना. यू कैन थिंक इन लेफ्ट ऑफ दिस C और राइट ऑफ C से. राइट ऑफ C से निकालेंगे. 2.5 इंटू 3 कितना आएगा? 7.5 सर. वो आ गए ना. So whenever you draw bending moment diagram, you can think in the left direction or in the right direction, either or, not together. Yes. क्योंकि Yes, yes. टुगेदर क्यों नहीं? यहाँ से मेरा अभी मोमेंट डायग्राम कैसे, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट ऐसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. VA इंटू 1 मतलब 7.5 इंटू 1. Clockwise. ये मैंने कैसे निकाला? यहाँ से निकाला, लेफ्ट साइड को देख के. ये आई कैन थिंक ऑफ VB इंटू 3 मतलब 2.5 इंटू 3 7.5 एंटी क्लॉकवाइज. Yes, This is sir. my equilibrium equation of the bending moment. Yes, sir. If you think on the right, ऐसे Yes. left ऐसे equation. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Now, sir. यहाँ तक मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, बाद में आपको ये डिराइव करना है. ये आपको मैं ये प्रॉब्लम्स दूंगा. Try to draw this. अभी why I am showing this problem because these are the problems. इसके ऊपर ही आपने बहुत बार रिहर्सल किया, प्रैक्टिस की. If you try to understand this in different ways many times, even after 1 year 2 year भी सोच सकते हैं इसको. क्योंकि whatever these problems I have given to you, almost all of the structures of the world, most of the structures of the world lie within this framework. Within this framework of the understanding, मतलब concept जो इसमें से आपको जो मिलेगा ना, whatever concepts you will understand by solving these problems, by understanding these problems, by visualizing these problems, that will help you to solve different kind of problems in the world of different structures. इसलिए वो simple problems है, तो आपको ये करना है. I'm not giving you each and every solution of all the problems because now you need to think. Yeah, you can ask me questions if you get any problems during the practice, but during the practice, I'm not going to give you the answers. I'm not
going to give you the answers, but I will ask you more questions. Okay, I will ask you more questions. Why I will not give the answers directly, and why I am going to ask you questions, more questions? Can anybody tell me? Yes. Not getting your question, sir. Whenever I give you questions, assignments, or this kind of say problems, if you ask me questions, I will not give you answers, but I will ask you more questions on that. Yes, sir. Why I'm So, going, yeah. Yes, please. to show the path of the answer, sir, you ask more question. Yeah, because if I give you the answers, there will be full stop हो जाएगा, conclude हो जाएगा सब, right? Yes, sir. You will believe me, and yeah, ऐसे ही रहता है, चलो conclude. Whenever you conclude on anything, you stop Yes, sir. the process. Process stop हो जाता है, आपका thinking stop हो जाता है, because you believe that yes, ऐसे होता है, ये answer ये final खत्म, मतलब 2 into 2 4. Now I need not to think much. ये ऐसे ही रहते हैं, समझो. But when I ask questions more, then you will think again. बाद में सो थिंकिंग हो जाएगा, बहुत बार थिंक करके आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाने वाला है. Yes, sir. It will develop your understanding by thinking on more questions, again thinking, again try to solve the problem, try to solve बोल रहा हूँ मैं. Try to solve means अभी ये चालू है, ये प्रोसेस चालू है. That means I don't want your process to stop. Yes, sir. समझ में? Yes, sir. क्योंकि अगर प्रोसेस स्टॉप हो गए तो खत्म, लाइफ इज ओवर, मतलब सब ओवर हो जाएगा. समझ में है? सो प्रोसेस, द शो मस्ट गो ऑन. समझ में है? Yes, sir. शो मस्ट गो ऑन के लिए आई विल नॉट अलाउ यू टू स्टॉप, and to not allow to stop, I will not give you the direct answers. And that is the process of learning. Process of learning is continuously process करना है आपको, continuously think करना है. That is the way. Okay. So whenever you try to learn, understand, please don't stop. Okay. Yes. Anybody? Sir, I want to discuss. You want to discuss LBS structure, sir. Previous houses design, sir. Load bearing structure. In that. Okay. पूछो. सर उसमें सर कॉलम तो होता नहीं था सर, जस्ट वॉल बीम पे हम स्लैब रेस्ट करते थे. यस. फिर तो सर मतलब एट द मैक्सिमम लोड पे सर स्लीपिंग टेंडेंसी या जनरेट हो सकती है सर, क्योंकि सर वॉल बीम पे सर वॉल की थिकनेस का ही बीम रहता था सर, अराउंड 10 इंच. लोड बेयरिंग यू आर टॉकिंग? हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लोड बेयरिंग ओल्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग सर. ओके. तो उसमें क्या ड्रॉ सर करेंगे? ये समझो मेरा लोड बेयरिंग वॉल है, और ये समझो मेरा, इसमें बीम भी रहते हैं ना उसी थिकनेस का. यस सर, 10 इंच का थिकनेस का बीम रहता है. See, whenever you draw say sketches which will resemble the reality, बहुत बार वहाँ problems solve हो जाते हैं. Many times the problems are not solved in your mind. This gets solved in the reality or near to the reality. Oh, tell me the question now again. सर क्या स्लिप हो रहा है इसमें बताओ. एक्चुअली सर जो हम स्लैब को मोमेंट रेजिस्ट मोमेंट करने के लिए एम्बेडेड करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में, रेनफोर्समेंट के साथ सर टाइप करते हैं स्लैब का. यहाँ पे तो सर हम बीम में एम्बेडेड करते हैं सर. तो स्लैब का रेनफोर्समेंट तो जा रहा है बीम में मेरे. हाँ, तो सर वो ये पता लगाया जा सकता है कितने फोर्स के बाद ये स्लिपिंग टेंडेंसी जनरेट हो जाएगा. कौन स्लिप होगा? अभी लेट्स से अभी लोड बेयरिंग का मैंने पहले रियल क्या रहते हो ड्रॉ करता हूं मैं. दिस इज माय रेनफोर्समेंट इन द स्लैब.
ये बॉटम और टॉप रेनफोर्समेंट बहुत बार रहती है, या बॉटम में रहती है जनरली, बट डेंट बार भी रहते हैं। अभी मैं दोनों दिखाता हूँ, लेट्स से। अभी ये दिस इज द केस एंड देयर इज यस सर, यस अभी इसके बीम के भी रेनफोर्समेंट है। लेट मी शो इट बाय सम डिफरेंट कलर। यहाँ भी बीम्स है ना, यस सर, ये हुक्स, यस सर, यहाँ बार से समझो, राइट। यस सर। ना क्या स्लिप होने वाला बताओ? सर एक मैं पूछ रहा हूँ सर, एट ए सर्टेन फोर्स, जब सर फोर्स मतलब अमाउंट इंक्रीज हो जाए ड्यू टू अर्थक्वेक अदर लोडेड अदर थिंग, अर्थक्वेक इसको डोंट कैसे थिंक, कैसे? वर्टिकली दे सोचो, लोड बेरिंग के लिए थोड़ा डोंट थिंक ऑफ द अर्थक्वेक। लेट्स ओके ये ऐसे ही लोड है हमारे, समझो। अर्थक्वेक का थोड़ा अलग बात है। ओके सर। अभी ये इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? डू यू थिंक दैट ग्रेविटी लोड हैज अ इशू? नो सर। यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्थक्वेक? यस सर, यस सर, सो इट्स अ डिफरेंट फिनोमेना। अब वो जब अर्थक्वेक सीखेंगे ना, तब वो यस ज्यादा सर, कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, या ग्रेविटी के लिए डू यू फील इट इज ओके फाइन? यस सर, बिकॉज दिस बीम विल हैव रिएक्शन लाइक दिस ना, यस सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसको। यस सर। इन जनरल आई जस्ट गिव यू, बहुत सारे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स अर्थक्वेक में फेल हुए हैं, यस सर, क्योंकि देयर आर मेनी रीजंस। अर्थक्वेक के कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे हम, बाद में वो। देन यू अगेन रेज दिस क्वेश्चन और यू थिंक ओवर दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि अर्थक्वेक में अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स पे लोड आया अर्थक्वेक का, वो कैसे आता है पहले पता चाहिए। हाउ द लोड कम्स ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड how that structure behaves, how that structure tries to resist that earthquake force, what are the forces generated into that structure, load bearing wall and beams and all. Then you can understand what will happen to that, and will there is a possibility of any failure you are thinking. Whatever यस सर, failure you think, you should be able to show it. Then and then your question becomes correct. यस सर, Many times we get some questions which are not correct because they are imaginary questions and which may not relate to the reality. Many times we, as a curiosity, as a curiosity, we get a lot of questions, but those questions may not be correct or may not be appropriate because you haven't verified those questions. I'm not saying you haven't verified the answers. I'm saying you haven't verified the questions correctly. You haven't matched the questions to the reality. So बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ तो क्यूरियस क्वेश्चंस रहते हैं बट वो रिलेट नहीं होते प्रॉपरली, क्योंकि दिमाग में कुछ भी आएगा, मुझे ये ऐसे क्यों रहता है, वो वैसे क्यों रहते हैं, मतलब विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू द क्वेश्चन। और अर्थक्वेक में वो देखेंगे हम, वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दैट। अर्थक्वेक में बहुत सारे कंसेप्ट देखने वाले। फिर भी मैंने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह डिस्कस किया ना ऑलरेडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह आए। यस सर, हाँ, तो उसके रिलेशंस में वो आने वाला है सब कुछ। ओके सर, अभी ठीक है, आई डोंट वांट टू गिव द आंसर बट आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। अभी अर्थक्वेक आ रहा है ना इसको, तो अर्थक्वेक में तो हमें पता है कि लोड्स कैसे आते हैं। ये ऐसे लोड आएगा ऐसे, राइट, हॉरिजॉन्टली, यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होने के ट्राई करेगा ना ये यस हॉरिजॉन्टल सर, लोड आने वाला है अर्थक्वेक की वजह से। नाउ यू हैव दिस इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो दिस इज अ वॉल, ब्रिक वॉल। अभी मैंने देखो, योर क्वेश्चन आई एम डिफाइनिंग इट इन अ बेटर वे, बिकॉज वॉट इमेजिनरी वो ज्यादा नहीं डिफाइन होता, ये रियल में स्केचेस की फॉर्म में थोड़ा ज्यादा रियलिटी में लग रहा है मुझे। अभी ये ऐसे लोड आने वाला है, कुछ तो फोर्स आएगा, कुछ भी फोर्स रहेगा, लेट्स से एच। अभी क्या होगा इस फोर्स से, ये स्ट्रक्चर को ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा, कहाँ क्रैक आएंगे, क्या होगा, थिंक ओवर इट। नाउ इट इज क्वेश्चन टू यू अगेन। आई टोल्ड यू आई विल नॉट गिव द आंसर, लेकिन आई हैव डिफाइंड योर प्रॉब्लम in a better way so that you can solve this. Okay, so any questions? Now I'm going to conclude the sessions, but any questions if you have, you can ask.
Please install your ETABS on your machines. बाकी लोग कुछ पूछना है? दीपक, रोहित, सागरिका, संजय, Amarjeet. Yes. Did you get what the today's session, whatever the concepts I was trying to teach you? Yes, sir. Yeah. सर रोलर सपोर्ट सर नॉर्मली हम लोग सर ब्रीज में यूज करते हैं क्या? Yes, रोलर करते हैं, मतलब they are actually roller means क्या बोल सकते हैं? Bearings, in terms of bearings. Yes, we can say. रोलर बियरिंग सर यूज करते हैं। हाँ, bearings रहते हैं वो। So the bearings ऐसे कुछ बिहेवियर के I will try to show. बिहेवियर में अगर सोचा गया ना, कंसेप्चुअल बिहेवियर बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं रोलर नहीं बता रहा हूँ, ऐसे कुछ तो रहता है ये बेरिंग्स ऐसे फॉर्म में, समझ में आया क्या? रोलर मतलब फुल रोलर नहीं रहता, गाड़ी की तरह नहीं रहता, अगर अदरवाइज वो ब्रिज स्लाइड हो जाएगा। हाँ वही वही तो, हाँ, तो मतलब अभी ये ना, ये थोड़ा है ना, ऐसे राइट साइड को थोड़ा स्लाइड होता है, ये ऐसे आगे जाएगा ना, बट ये पूरा आगे नहीं जाएगा, नहीं तो उस ब्रिज ही कोलैप्स हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ लिटिल मूवमेंट। ये दिख रहा है कि ये देखो, अगर आपने इस पे इसको ऐसे फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा तो जाएगा ना, ऊपर ऐसे जाने की संभावना है, राइट? इट विल गो लिटिल मूवमेंट, ऐसे थोड़े आगे जाएगा ये और स्टॉप हो जाएगा वहां। बाद में यहां से अगर लोड दिया तो यहां से भी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे स्लाइड हो जाएगा, समझ में? सो देयर इज अ लिटिल अलाउंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, लिटिल अलाउंस, समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब वो पूरा नहीं तो पूरा गए तो गिर जाएगा ब्रिज के नीचे, थोड़ा सा हाँ। अलाउंस है इसका। इसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा शॉक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रही है हॉरिजॉन्टली, लिटिल, इतना ही, इसके ज्यादा नहीं जाता। इसलिए ब्रिज में अगर देखो, इफ यू आर ड्राइविंग और यहाँ बहुत सारे हेवी व्हीकल जा रहे हैं, तो यू फील अ वाइब्रेशन, वाइब्रेट करता है थोड़ा सा वाइब्रेशन लगता है, ऐसे लगता है कि गिरेगा क्या। देखा है ना, हैव यू फेल्ट दैट मोमेंट? यस सर, थोड़ा सा ऐसे यस सर। डर लगता है थोड़ा सा, अरे गिर रहा है क्या, कुछ हिल रहा है, मतलब ब्रिज हिलेगा क्या। सो ये ना, ये थोड़ा सा उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अलाउड है इसमें, और वर्टिकल भी है थ्रू द बेरिंग्स। शॉक ऑब्जर्वर है वो, शॉक ऑब्जर्वर विच हैज अ लिटिल मूवमेंट डाउनवर्ड एंड लिटिल हॉरिजॉन्टल आल्सो। तो ये ऐसे कुछ तो रहते हो। सॉरी। और सर गटर को ये गिरने से बचाने के लिए सर हम लोग अरेस्टर भी देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स अरेस्टर सर, आल्सो कास्टिंग। क्या क्या क्या? गटर को सर गिरने से बचाने के लिए, गटर, हाँ, गर्डर की ओके, बीम ओके, हाँ हाँ, अरेस्टर प्रोवाइड करते हैं सर, ट्रांसवर्स अरेस्टर एंड लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर राइट। ऑन द साइड से। अभी ये सपोर्ट मैंने जो बोला ना, मैं कंसेप्चुअली बताया है, और इसके अलग अलग टाइप्स है, इलास्टोमेरिक बेरिंग्स, ये इलास्टोमेरिक भी, यस सर, या इलास्टोमेरिक भी है, बहुत सारे टाइप्स है उसमें। सर। नॉर्मली सर कॉलेज में ना सर, मेरे को ये रोलर सपोर्ट के बारे में मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाया था कि क्या चीज है, मतलब बताया नहीं था। वो डायरेक्टली बताया था कि ब्रिज में इस सपोर्ट को नॉर्मली बस इतना जान लो कि इस सपोर्ट को हम लोग नॉर्मली ब्रिज में यूज करते हैं बस। हाँ, अभी ये और देखो ना, इफ यू डू मुझे दिस, समझाया था कि हाँ, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड होगा तो उसमें आपका एक रिएक्शन अपवर्ड होगा, मूवमेंट होगा। रोलर होगा तो उसमें आपका एक हाँ, रिएक्शन अपवर्ड होगा और वहां पे मूवमेंट होगा। लेकिन वो फिक्स मैकेनिकल हो गए उसका मीनिंग। यस, ऐसे करके हम समझाया था डायरेक्टली कि ऐसे ऐसे होगा तो आपको ऐसे निकालना, यस, उसको तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, दिमाग नहीं लगेगा, जब मगअप करो और जगह जाओ। बस व्हेन आई से डायरेक्टली सपोर्टेड, ऐसे करो ऐसे करो, व्हेन इट इज अ हाँ, रोलर ऐसे करो ऐसे करो, बस फिक्स यहाँ पे रहेगा, सिंगल ऐसे ड्रॉ रिएक्शन करो। होगा। हाँ, ऐसे। हाँ, एक एक रिएक्शन होगा, एक मूवमेंट होगा फिक्स में, ऐसे करके। नहीं, वही तो ना, सी मैंने जो बताया ना, कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हमें आंखें नहीं दी एजुकेशन ने। दे डोंट अलाउड अस टू सी द थिंग्स, they don't teach us to listen the things, they don't teach us to sense or touch। ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब मैं सी आई एम नॉट डायरेक्टली वो नहीं कर रहा, लेकिन आंखें ओपन करना ही एम है एक्चुअली। वन शुड, यस यस सर। अगर आपको देखने आया गया ना सब कुछ, तो कंसेप्ट नहीं, नॉलेज तो एक्चुअली दुनिया में सभी जगह है। नॉलेज इज एवरीवेयर। यू यस शुड सर। बी हैव द ओपन आइज, ये ओपन आइज सर अभी चाहिए। आपने जो भी बताया था ना सर, अभी वो स्वे एनालिसिस और स्टिफनेस हम्म, मैट्रिक्स मेथड पे वो सॉल्व होता था। अभी का जो आपने बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन वो जो निकाले हैं अभी आप, हम्म, ऐसे करके हम्म, मतलब
वो सोचने लगे कि या ये तो पढ़ा था कॉलेज टाइम में करके, राइट बट वो राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। बट हाँ, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे सॉल्व करके निकल जाना। हाँ तो ये मगअप करने का, ये फ्रेम निकालो, हाँ ये लोड आएगा तो ऐसे क्या, होगा ऐसे ना, ऐसे एक ड्रॉ से करो, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ड्रॉ करो। ये सिंपली ऐसे लोड है तो अभी पिन नीचे रहेगा, से फिक्स होगा तो पिन इधर रहेगा तो टेंशन ऐसे होगा, ड्रॉ उधर करो। हाँ कंप्रेशन हाँ, होगा, बस सिर्फ ऐसा मगअप था। करने का, सिर्फ ऐसे करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, मतलब। लेकिन वो यस सर। वैसे ही है क्या, वो एश्योर जज नहीं करें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है ना, हमें कहाँ कंस्ट्रक्शन करना था ना उसका हमें पेपर में ड्रॉ करना था सिर्फ, गलत हो गए तो फिर गिरने नहीं वाला कुछ और स्पेशली जो अभी आपने वो एम्बेडेड बार का जो आपने बताया था कि हाँ ये उससे पहले बीच में आई सेक्शन लेकर के जो आपने बताया था, वो तो हाँ, बताया भी नहीं था कॉलेज में। नहीं नहीं, वो सी कॉलेज में है ना, सी उसको सर एक बार सर, अगर हो एक बार फिर से एक बार उसको रिवाइज करा देते ना सर, यही है ना, लास्टली। करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अभी बहुत आने वाला है, ये नहीं सर, करूंगा मैं। इससे पहले वो कंक्रीट बार का जो था जिसमें कंप्लीट, हाँ ये दिस वन एम्बेडेड येलो, हाँ हाँ हाँ, ये ये वाला, वाला ना, यही ना, हाँ इसमें यही है ना। ये चीज बताया भी नहीं था, मतलब टेंशन कंप्रेशन दोनों एक ही जगह पे हो रहा है और अपोजिट हो जाता है, अंदर कुछ होता है बाहर अब कुछ होता है इसमें। उसी उसी को तो रिएक्शन एंड एक्शन बोलते हैं, यहाँ एक्शन डेवलप हो रहा है और यहाँ रिएक्शन डेवलप हो रहा है ना, यस सर, दैट इज यस सर। एक्शन रिएक्शन ना। एक्शन रिएक्शन, हाँ सर। वो हाँ, वही। मतलब अंदर वो फिक्स है, एम्बेडेड है, मतलब कंक्रीट पूरा भरा हुआ है, करेक्ट बाहर करेक्ट। मतलब ब्लॉक है पूरा वहां पे, तो अंदर वो का बाहर नहीं रिएक्शन आने अलग वाला। होता है, बाहर का यस रिएक्शन अलग हो जाता है दोनों का। यस यस यस। अभी ये जॉइंट पे इक्विलिब्रियम है उसका, इक्विलिब्रियम हो जाता है इसके सिग्मा कारण। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वहां है ये पॉइंट पे, ये यहाँ है हाँ टी और यहाँ है टी, खत्म। जी जी। अगर वो नहीं हुआ तो ये बाहर निकल आ जाता था, हाँ, वो कोलैप्स कर जाएगा एक कोलैप्स प्लस कर एक जाएगा। क्रैक करके। और व्हेन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, इट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। यस सर। सर बुक भी सर देखना होगा सिर्फ या बुक हो नहीं, जाएगा ऐसे? बुक को पहले मत देखो, पहले आके इस्तेमाल करो ऐसे। बुक क्या ओके है, सर। बुक में वही वही इमेजेस दिखेंगे, ये ऐसे इमेजेस दिखेंगे आपको ये बुक में, तो बाद में एक्चुअली ये इमेज इज नॉट टेलिंग यू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। मैं ऐसे आई विल गिव यू सम गाइडलाइन कि आप है ना इसको रियल में कैसे देखा जा सकता है, ये एटलीस्ट क्वेश्चन तो ये करो डेवलप आपके दिमाग में, ट्राई टू क्रिएट अ क्वेश्चन ऑफ दिस इमेज विच इज गिवन इन द बुक, कैन आई रिलेट विथ अ रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर को रिलेट में कर सकता हूं क्या, ऐसे सोचो और इसको ढूंढो। आई नो दिस विल यू विल नॉट गेट इट इन बुक्स, बट एटलीस्ट ट्राई टू सर्च, डिस्कवर करो क्या है ये, समझ में आया? ये हाँ सर। डिस्कवरी आपकी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बुक्स में तो यही इमेजेस है, वो तो कोई चेंज नहीं होगी, बुक्स इज बुक और वैसे ही है जैसे था, दिस इमेज विल ये नॉट चेंज इन द बुक। सर एक एंड चीज और सर पूछना था yes, सर, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड है ये, और हिंज सपोर्ट में क्या डिफरेंस है सिंपली सपोर्टेड और हिंज में? डोंट यूज दैट वर्ड, हिंज पिंड वही एक ही है, ये ऐसे बिहेव कर रहे तो उसको बोलो सिंपली वर्ड है। नहीं अभी, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये जो वर्ड्स है ना जो ढूंढे आपने पढ़े हुए हैं, ज्यादा वर्ड्स को इंपॉर्टेंस मत दे दो, सिंपली ये ऐसे रहेगा तो ये हिंज बोलो इसको या पिन बोलो, और उसको नहीं बोला, इसको मैंने फिक्स बोला और ऐसे ड्रॉ किया, तो ये मैंने फिक्स बोलने से वो फिक्स नहीं होने वाला, ये कैसे बिहेव हो रहा है इससे वो उसका बिहेवियर वो डिसाइड हो रहा है। बिहेवियर से वो डिसाइड होता है कैसा सपोर्ट है मेरा। हाँ बिहेवियर से डिसाइड हो रहा है, नाम से नहीं हो रहा। ओके, आपका नाम मैंने चेंज किया तो आप चेंज नहीं होने वाले, बिल्कुल isn't सर। it? हाँ सर। ऐसे ही है। और हिंज सपोर्ट का नॉर्मली एग्जांपल वो डोर होता है ना, वो डोर का हाँ यस एग्जांपल, यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। मतलब यही डोर वो है ना, सपोर्ट सोचो ये डोर है, मेरा प्लान में दिख रहा हूँ मैं, अचानक समझ में नहीं आया, मतलब कैसा कहाँ पे कैसा सपोर्ट हाँ इस टाइप से। हाँ सर, ये प्लान में बिल्कुल मैं बिल्कुल। अगर इसको डोर बोलूंगा प्लान में, तो डोर ऐसे हाँ ओपन सर। करते हैं ना हाँ ये सर। ये हिंज रहते हैं। नाउ मैं पूछूंगा कि लुक एट द डोर हिंज, घर में देखो कि डोर कैसे मूव होता है हाँ, और वो वो हिंजेस रहते डोर हैं ना, उसको सोचो। ओपन रहता है, फिक्स रहता है, एक पॉइंट से मूव करता है एक एक्सिस पे, एक फिक्स एंगल पे मूव करता है, इतना से हाँ, इतना, और क्या बोलते हैं उसको, मैंने हम हिंज, हिंज बोलते हैं। यस सर। हमारे सपोर्ट को भी हिंज भी बोलते हैं ना, हिंज सपोर्ट। यस सर। तो ये हिंज भी हो सकता है, उसका नाम दूसरा भी है पिंड। पिंड मतलब ऐसे में ऐसे होल निकल के उसमें एक डाल दिया तो घूमने को अलाउ कर रहा हूं मैं, हिंज पिंड।
अभी सिंपली सपोर्टेड वर्ड जो बोलते हैं ना हम, जी एक्चुअली अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ऐसे मैं तो बोलूंगा कि डिस्कार्ड कर दो तुम्हारी डिक्शनरी से, उससे अच्छा कुछ समझ में नहीं आता। अभी हिंज कैसे, डोर की हिंज की वजह से मुझे कुछ तो रिलेट तो हो रहा है, सो दिस वर्ड इज गिविंग मी सम आइडिया आइडिया अबाउट, यस सर मतलब वर्ड का सिग्निफिकेंस है इसका कुछ तो, क्योंकि डोर के हिंज यस से मुझे समझ में आ रही है, हाँ डोर का हिंज भी यस ऐसे। अभी ये सिंपली नॉर्मली जैसे ये फिक्स सपोर्ट है ना, फिक्स सपोर्ट के नीचे अगर वो हम डॉटेड नहीं लगाते तो उसको वहां पे हिंज कंसीडर करते थे हम लोग। यस यस वो करेक्ट है या मतलब जैसा अभी पढ़ाया गया था? अभी पढ़ाए गए हैं, अभी आपने क्या ड्रॉ किया तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कुछ भी ड्रॉ करो, मुझे इतना पड़ने वाला है। अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मैंने सी आई हैव चॉइस। ये हिंज का सर एप्लीकेशन कहाँ पे, मतलब हिंज सपोर्ट वगैरह कैसे कहाँ पे यूज करते हैं? नॉर्मली जैसे हम लोग सिंपली फिक्स सपोर्ट यूज करते देखे हैं, हाँ फिक्स्ड है आपको, रोलर सपोर्ट देखे हैं, मतलब हिंज का किधर एप्लीकेशन कहाँ पे होता है जब हम लोग किस जगह पे इसका यूज ये क्या करते हैं? मैंने पहले ड्रॉ किया था, ये हिंज ही नहीं, ये क्या है फिर? हु इज दिस? स्टील स्ट्रक्चर में नहीं क्या हिंज है? सर बट यहाँ पे तो फिश प्लेट मतलब सब यूज करते हैं ना, क्या? फिश प्लेट वगैरह यूज करते हैं ना इस जगह नहीं पे नहीं, यहाँ दोनों मैंने को। ओपनिंग दिया है, देखो ये हिंज है अच्छा मेरा। अच्छा अच्छा अभी हिंज कहाँ पर? सी इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी ढूंढो इसको। यस देयर आर रियल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर हैविंग हिंज। वो तो नहीं सर, पता नहीं चल रहा। फिक्स्ड में तो जैसे समझते उसका एक इंड है ना नीचे, मतलब किसी एक साइड से वो फिक्स होता है, या तो अपवर्ड नहीं ले नहीं, लो या फिक्स नहीं डाउनवर्ड। है, ऐसे ही दिखने चाहिए आपको। टीसी दिखा, वो कनेक्शन रहेगा तो ही फिक्स रहेगा। आपको दिखाई देता है मतलब आपको डायरेक्टली मुझे दिखाओ वो क्या है। इफ यू कांट सी दैट मीन्स वो नहीं है। जब तक आपको दिख नहीं जाता तब तक नहीं है, ऐसे समझेंगे। लेट्स से तो ऐसे ढूंढने का गूगल तो है हमारे पास, यस सर डालने का, तो आपको पता चलेगा। फिर वहां यू विल गेट दैट आइडिया। अब एक कंसेप्ट समझने के बाद आगे देखो दिस, बताए क्या यस क्या सर ब्रिज सच अ बिग स्ट्रक्चर। ये आदमी देखो, और ये कितना बड़ा मेंबर है, लेकिन हिंज है ये, यस सर है यस कि सर नहीं? यस सर वो डेप्थ कम है, डी इज वेरी लेस। अभी डी ले मतलब इसके हिसाब से लेस है, इसलिए बोल रहा हूं मैं सच। तो ये बोल्ट की तरह है, बोल्ट। और ये अगर यस आपका लोड आया तो ये रोटेट होगा कि नहीं है, ये एंगल पे होगा ना, यस ये सर जमा होने। हाँ सर रोटेट यस होगा सर वो। यस सर प्योरली है ये हमारा। क्या है फिर? ये यस रियल का स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ, सी दिस, सच ए पिंड ऐसे सर घूम रहा है सच सर ये। टाइप ऑफ हाँ मतलब जो भी हम लोग केबल बार और टेंडेंस वगैरह इंडियन यूज करते हैं सब में हम लोग हिंज का मतलब कर देते, प्रोवाइड करते हैं। क्या 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 हावड़ा हावड़ा ब्रिज सर हम्म सर जितने भी मतलब हम लोग बार वगैरह जैसे टेंडेंस वगैरह प्री स्टेज वगैरह में सब यूज करते हैं। हम्म। केबल केबल ब्रिज जो होता है सब में हम लोग इसी तरह का प्रोवाइड करते हैं एक तरह से। केबल का थिकनेस बहुत कम है ना, डायमीटर। तो वो उसको सी हमारा मोमेंट ये फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ टी और सी चाहिए, और डेप्थ भी चाहिए उसको सफिशिएंट। भाई केबल ओके को क्या डेप्थ है क्या? वो इतना पतला केबल नहीं नहीं रहता उसमें है, नहीं होगा। तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है मोमेंट पॉसिबल लेने की ताकत है क्या? केबल में लोड दिया तो विल इट ऑफर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? वो झुक जाएगा ना, स्टैक हो जाता है। दैट मीन्स इट कैनॉट टेक मोमेंट वेरी इजी। इट शुड हैव डेप्थ आल्सो ना, इनफ डेप्थ। तो वहां यस पॉसिबल। ये सीधी सी, ये भी देखो, ये देखो, ये है प्योरली हिंज स्टील सेक्शन में। देखो ये देखो, एक यस देख लिया छोटा सा समझ बोल्ट गया। है और ये ऐसे। छोटा सा वहाँ पे बोल्ट है, रोटेशन है उसमें। बिग स्ट्रक्चर्स आर हैविंग हिंज कनेक्शंस। यही तो ब्यूटी है ना उसकी। ये देखो यहाँ है कि यस हिंज एंड रोलर, ये रोलर है। यस सर तो नीचे यस हाँ देयर आर, रोलर हो गया सर। यस। अभी वो कनेक्शन डिजाइन करते समय ये सोच जो हमने सीखी आज वो डेवलप हो जाती है उसमें। अभी लेट से दिस, यहाँ क्या है? लेट टेल मी हु इज दिस फिक्स हिंजर, क्या है ये अलग? यस थोड़ा सर जूम फिक्स्ड होगा सर वो, उसको हम लोग बोल्ट और फिश प्लेट से उसको कनेक्ट किए, मतलब वो टाइटेड है वहां पे, फिक्स सपोर्ट बोल्टिंग होगा। दिख रहा है, बोल्टिंग है सर तो फिक्स है सर वो। कभी भी है ना सर, एकदम फास्ट नहीं देने का। ओके मतलब
क्या होता है, whenever you give immediate answer ना, there is a possibility कि आपने ज्यादा केयरफुली उसको देखा नहीं, पॉसिबल है इंस्टेंट नहीं देने का, क्योंकि क्या होता है whenever you try to give answers very instantly, वो कभी कभी गलत भी हो सर सकते हैं। हिंज है सर, हिंज है सर। थोड़ा सा अटेंशन दे दो, नहीं नहीं फिर भी सही है गलत ये ढूंढ नहीं रहे हम, आप ठीक तरह से देख रहे हैं क्या उसको, वही इंपॉर्टेंट है। यस सर, यस। राइट, अभी यहाँ का किसके दो वेबसाइट में है नहीं है, नाउ आएगा नहीं। सर नॉर्मली जब हम बोल्ट और प्लेट प्रोवाइड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसको तो फिक्स कर देते हैं ना, या वेल्डिंग के थ्रू? नहीं 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 नहीं, सी व्हेनेवर यू से फिक्स, क्या है फिक्स, टेंशन कंप्रेशन सपोर्ट में भी पास होना चाहिए। ओके सर, समझ में है ना? हाँ सर। हमारे वर्ड्स नहीं बता रहे कि वो क्या हो रहा है, वो वहां है क्या टेंशन लेने के लिए कोई, तो can I transfer the tension into the support, can I transfer the compression into the support, does that member is having enough depth to offer a moment of resistance, then it is possible, right? यस यस See sir, please explain this one sir. is this one? Yes sir, actually as per this one is hinge support sir. नहीं, हिंज भी नहीं होगा वो। ये हमें बता दो, ठीक है, मैं इसमें ड्रॉ करके देता हूँ, उसी को यहाँ जाएंगे आप इसमें। यस, ये तो ऐसे प्लेट तो है उधर, राइट, ये ऐसे प्लेट है और यहाँ मेरा कंक्रीट ये है ना, वॉल है कुछ तो, यहाँ बड़ी वॉल है यहाँ, राइट, इज अ थिक वॉल ओवर हियर कंक्रीट, ओके। और यहाँ मेरे जैसे बोल्ट है ना, अंदर थे ना, वो दिख रहे हैं ना बोल्ट? यस सर, यस सर, बोल्ट है सर, हुए ऐसे, यस सर, राइट, और यहाँ भी है वो बोल्ट छोटे छोटे, यस सर। और यहाँ मेरा फ्लांज है, उसका आई सेक्शन का फ्लांज है ये, राइट। यहाँ वेल्ड अभी कहाँ गया, सर एक प्लेट है आगे पे सर, हाँ उसके प्लेट है, करेक्ट, राइट, ये यहाँ प्लेट भी है, यहाँ से प्लेट है और यहाँ बोल्ट से, राइट। अभी ये बोल्ट और यहाँ भी है, ये वाली यहाँ भी एक प्लेट है जिसमें से ये बोल्ट जा रहे हैं। अभी दिस विल ट्राई टू हैव अ टेंशन, समझ में आया? तो ये टेंशन अभी यहाँ भी बोल्ट से है सामने, एक मिनट, तो ये है ना, थोड़ा सा ऊपर है बोल्ट, राइट। दिस टेंशन दैट मीन्स यहाँ ये टेंशन लेने के लिए कोई तो है इधर, यस और नो? ले रहेगा नहीं, थोड़ा सा अवे है बट यहाँ है ना, रोटेट ये तो पुल करेगा ना पीछे, क्योंकि यहाँ बोल्टिंग किया मैंने यहाँ, यस सर, दैट मीन्स ये टेंशन लेने के लिए यहाँ है, इसका मतलब ये टेंशन मेरा डेवलप हो सकता है। यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉम्प्रेशन यहाँ, ये थोड़ा एक्चुअली यहाँ है बोल्ट हो थोड़ा सा, और यहाँ बोल्टिंग किया तो ये कॉम्प्रेशन भी यहाँ से ये पास हो रहा है, ये ना सी, समझ में है ना? यस सर, यस। इसका मतलब ये मोमेंट कनेक्शन है, और इसके बीच में डिस्टेंस है डी, तो बीम में बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है ये टी और सी की वजह से, और उसका रेजिस्टेंस ये बोल्ट की डिस्टेंस की वजह से हो रहा है कंक्रीट में। सो दिस इज क्रिएटिंग दिस मोमेंट इन द मेंबर एंड दिस सपोर्ट इज रेजिस्टिंग दिस मोमेंट।
So this is your overturning air bending moment in the overturning, and this is your resisting bending moment in the support. So when they are equilibrium, ऐसे clockwise और anti-clockwise, तो equilibrium आ रहा है, तो moment connection है. समझ में आया? Yes, sir. So simple. Yes, So sir. looking at the structure, you can say, tell that it is fixed or a pint. और ऐसे सोचो, गूगल पे जाओ और ढूंढो सब इमेजेस, आपके कंप्यूटर पे सेव करो, and think over it. Look at the pictures, you will understand more. Yes, sir. So that's it, I think, today. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night to all. Good night, sir.